The PFF National Challenge Cup 2020 is happening in Lahore right now. Yes, ladies and gentlemen, आजकल लाहौर में PFF National Challenge Cup जो कि पाकिस्तानी इक्विवेलेंट ऑफ द FA कप है, वो आजकल लाहौर में हो रहा है लाइव ऑन द माइक। NCC को पूरे तौर पे कवर कर रहा है। हमने पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ भी किए हैं कई मैचेस के फेमस स्टार्स एंड एथलीट्स लाइक सद्दाम हुसैन, सादुल्ला खान। उसके अलावा हमने और भी मैचेस को कवर करना है। सो मोर कंटेंट इज़ कमिंग योर वे एज द टूर्नामेंट गोज़ ऑन। बिफोर आई टॉक अबाउट द टूर्नामेंट इटसेल्फ और जो ग्रुप स्टेजेस अभी कंप्लीट हुई हैं और जो राउंड ऑफ 16 मैचेस आने लगे हैं कल से, I want to give a shout out to Pakistan Football Federation for the amazing organization जो उन्होंने किया इस इवेंट पे। डैनी लिमोनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग वर्क। सारा कुछ इतना स्मूथली चल रहा है। जितने भी प्लेयर्स से बात की है, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स से बात की है, और मेरा अपना भी जो एक्सपीरियंस है, दिस इज़ द स्मूदेस्ट एंड मोस्ट फन टूर्नामेंट जो अभी तक पाकिस्तान में लार्ज स्केल में हुआ है, पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके अलावा शब्बर एंड असाम जो PFF की मीडिया टीम और सोशल मीडिया टीम संभाल रहे हैं, आई थिंक उन्होंने तो कमाल कर दिया। देयर इज़ अनप्रेसिडेंटेड सोशल मीडिया कवरेज एंड एक्टिविटी जो PFF के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आ रही है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज एंड वेलकम स्टेप जो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में काफ़ी देर से मिसिंग था। huge amounts of praise goes to Shabbar and Assam and the media team जिन्होंने सारी कवरेज शुरू की है। constant match updates, final scores, top scorers, group tables, schedule, सब कुछ always constantly updating, और सबको जो है पता चल रहा है कि पाकिस्तान में एक टॉप लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। उस टॉप लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट का द नेशनल चैलेंज कप ग्रुप स्टेजेस हैव बीन completed आज on Wednesday while I'm recording this. The qualified teams are as follows. Group A से पाकिस्तान आर्मी और HEC, Group B से National Bank Pakistan NBP, Falcon Group came in second in Karachi United, Group C से KRL और KPT, Group D Civil Aviation Authority और अफगान FC चमन, Group E से वापटा, पाकिस्तान Navy and SA Farms, Group F से SSGC, SA Gardens, ग्रुप जी से पाकिस्तान एयरफोर्स और हज़ारा कोल कंपनी। सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि दो ग्रुप से 3 टीमें किस तरह क्वालिफाई की हैं। तो बेसिकली विद द अमाउंट ऑफ टीम्स एंड जिस तरह टूर्नामेंट स्ट्रक्चर हुआ है, दो जो टीम्स थी जो थर्ड आई थी, द टू बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स जो थी वो भी उन्होंने भी क्वालिफाई करना था। सो कराची यूनाइटेड आर द बेस्ट थर्ड प्लेस टीम इन द टूर्नामेंट राइट नाउ, दे गॉट 6 पॉइंट्स। उसके अलावा द सेकंड बेस्ट थर्ड प्लेस टीम वाज SA फार्म्स। इसकी वजह से ये दोनों टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई की हैं अलॉन्ग विद ऑल दी अदर टीम्स जो टॉप 2 आके क्वालिफाई की है अपने ग्रुप में। Group stages were great to watch, some absolutely brilliant results and some huge sort of discoveries and gems जो हमें पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में काफ़ी देर से नहीं नज़र आए थे। So first of all, पाकिस्तान आर्मी, KRL, CA और SSGC, ये हैं अभी द टीम्स टू बीट। नो सरप्राइजेज देयर, दीज आर द बेस्ट टीम्स इन पाकिस्तान। अभी तक ये चारों टीमें जो हैं वो अनबीटन हैं। मोहम्मद वहीद फ्रॉम CA, KRL से आलमगीर एंड इफ्तिखार अली खान, all of these players have been amazing. SSG से सद्दाम scored an absolutely brilliant free kick, और आज भी उन्होंने और सादुल्ला ने गोल्स किए हैं to secure the victory for SSGC. Army, KRL और SSGC, they are perfect right now in the tournament. 3 wins from 3, total 9 points हैं, not even a hiccup. मोहम्मद वहीद from CA, जिसकी मैंने अभी बात की थी, the top scorer of the previous challenge cup, he is currently the joint top scorer with Umair Ali of KRL. They have 6 goals in 3 games. Umair Ali scored an absolutely whopping 4 goals in 1 match against Popo FC. उनके बारे में भी बात करता हूँ because it's very important. उसके अलावा मोहम्मद वहीद is the only player in the tournament to score in all 3 games. He is on absolute fire. अभी जो round of 16 के matches हैं, the opposition KPT will definitely need to look out for Mohammad Wahid if they need to have any chance of going forward in the quarterfinals. Apart from that, Popo FC की बात करते हैं. Now, a lot of you may not have heard of Popo FC before the National Challenge Cup,
but I bet you have heard of them now if you're following Pakistani football. Popo FC have come out of nowhere on the national stage and won over everyone, won our hearts. They are the neutrals' favorites, or they were unfortunately the neutrals' favorites. They're now out of the tournament, and I'll tell you why. You might be wondering कि भाई एक कोई टीम है जो बाहर हो गई है तो फिर इतने शोर मचाने की क्या ज़रूरत है. The reason is because Popo FC are a team of kids, and I don't mean that in a derogatory way at all. They are a team of kids because they're under 20. They come from Islamabad. एक under 20 team जिसके अंदर सारे teenagers हैं who have not yet formed fully physically or in terms of football experience. They came all the way from Islamabad to their first national tournament और उन्होंने ऐसी कमाल फुटबॉल खेली है which पाकिस्तानी फुटबॉल हैज़ बीन yearning for. पाकिस्तानी फुटबॉल तरस रही थी ऐसी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, ऐसी क्वालिटी ऑफ अटैकिंग प्ले, और वो उन्होंने हमें दी है. They are one of the few teams who have been fun to watch regardless of the score. A bunch of kids went up against far more experienced and physically stronger players जो अरसे दराज से नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेल रहे हैं, who feel no pressure, who know what to do in certain situations. इनके लिए everything was new, and yet what did they do? They played their football. They played with heart. They played with bravery, passion, and skill. And it was so refreshing and wonderful to see. I know they got beaten pretty badly by KRL, who are, I think, the best team in the country right now. So there's no harm in that per se. I think defeat se hi, especially young teams, they learn from defeats, they learn from these experiences. And all I want to say is that Popo FC are a breath of fresh air in Pakistani football, and I wish them the best of luck and that they come in all future national tournaments in the future. ठीक है, अब round of 16 matches की बात करते हैं. They are starting tomorrow, मतलब Thursday at 10:30 a.m. You can catch all the matches live at www.mycujo.tv. All the matches are going to be live streamed there. The matches are as follows. It's Pakistan Army versus Falcon Group. It's KRL versus Afghan FC Chaman. Wapda versus Karachi United. Hazara Coal Company versus SA Gardens. HEC versus NBP. CA versus KPT. Pakistan Navy versus SSGC. And finally, Pakistan Air Force versus SA Farms. The matches to look out for are, I think, KRL versus Afghan FC Chaman. Both play some interesting football. KRL, the best team right now, as I said, probably. Or Afghan FC Chaman are a very solid team. So, dekhte hain. Probably ground or other factors surrounding the football match might make it tougher than it seems. Wapda versus KU, similarly, KU played some of the most exciting football in the tournament so far, except one half against Falcon Group, जिसके अंदर they completely dismantled. और यही KU के साथ एक worry है for people who support them कि if KU turn up properly, if they start strongly and with the proper mindset, तो फिर it's going to be very difficult for Wapda to get the better of them. But we will have to see कि कौन सी Karachi United shows up on the day. उसके अलावा Pakistan Navy versus SSGC. Pakistan Navy, again, a very experienced, a very established team on the Pakistani circuit against SSGC, जो on paper have absolute superstars. Saddam, Saadullah, I could go on. It's a whole list of absolutely huge stars in Pakistani domestic football. So it's going to be a very interesting match. And I think it might be closer than it seems on paper. Now, the most exciting thing before I wrap up is that round of 16 matches, now the business end of this National Challenge Cup starts. Agar aapne abhi tak nahi dekha, you have to start watching now. This is where it gets interesting. And I'll just tell you right now कि अभी अगले 4-5 दिन में round of 16 होगा, फिर अगले हफ्ते के शुरू से ही quarter final शुरू होंगे. Some of the potential matchups of the quarter finals are Pakistan Army versus KRL, which is going to be like a final. And then Pakistan Air Force versus SSGC. These two matches could be, as we could see these matches as soon as in the quarterfinals. Of course, in teamों को अभी अपने matches जीतने पड़ेंगे. The beauty of football is that you never know what's going to happen.